ओम शांति। ये 30 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज का मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। तो बाबा समझा रहा है कि इसका मतलब है भक्ति से जागो। जब हम भगत थे इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, तो हम सब ने अपने को बहुत अच्छा समझा था। हम समझते थे कि भगवान तो हमसे बहुत प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा और एक दिवस भगवान सबको दिखाएगा कि हमारा ही भगवान सच्चा है, हमारी ही भक्ति सच्ची थी। और भगवान आकर के क्या कहता है, तुम सबकी भक्ति झूठी थी। क्या बाबा बोल रहा है? बाबा कह रहा है कि भक्ति माना ही सो जाना, क्योंकि ये है अज्ञान अंधेरा। हम सब ने समझा था कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो अज्ञानी है। हमने समझा था हम जागे हुए हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। और जो आजकल मटेरियलिज्म आदि में जाते हैं, साइंस में जाते हैं, ये लोग सोए हुए हैं। हम तो भगत हैं, हम तो ऊंचे हैं, हम तो जागे हुए हैं। और बाप आकर के समझाता है तुम सब भक्ति में सोए हुए थे। और इसका खास नुकसान पड़ा है कि रियलाइजेशन भी नहीं रहा कि आप विकर्म कर रहे हो। एक प्रकार का विकर्म होता है रावण के प्रभाव से, और दूसरा विकर्म होता है गलत भक्ति करने से। बाबा कई मुरलियों में समझाया करता है कि हम सब ने कैसे भगवान की ग्लानि की है, भिन्न भिन्न मान्यता रख करके क्या क्या हमने बोला है, सोचा है, किया है। तो बाबा कहा कहता है कि तुम दूर होते गए हो और विक्रम का बोझ चढ़ता गया है। हम विचार करें, निराकार शिव की भक्ति आधा कल्प में कितनी परसेंटेज की? 1-2% होगा, नहीं तो पर के शुरुआत में बस कितना जन्म मालूम नहीं, 1-2 जन्म शायद होगा, परंतु बाकी सब 63 जन्म अलग अलग देवताओं की भक्ति, संतों की भक्ति आदि की है ना, तत्वों की भक्ति, परंतु निराकार शिव की भक्ति तो बहुत कम की। तो अज्ञान अंधकार हुआ ना। हम बहुत मस्त भी थे, तो इसलिए ये सो जाना, जब कोई नींद की मस्ती में स्वप्न में मस्त है, तो ये नींद हुई ना। तो बाबा कह रहे जाग सजनिया जाग। आप मेरी सजनिया हो, मैं एक राम हूँ, तुम सब आधा कल्प के आशिक हो, परंतु सोए हुए थे। आशिक बने हो दूसरों के प्रति, ठीक है ना। शिव बाबा के प्रति तो हम आशिक तो था ही नहीं। हम बुद्ध अनेकों के साथ हमारा बुद्धि का योग लग गया है। तो अभी जाग सजन्य जागो। तो अभी बाप आकर के नया दिवस, नया सवेरा। तो देखो, जब हम जागे हुए हैं सत्युग और त्रेता युग में, तो हम किसी की भक्ति करते हैं क्या? नहीं। जागे हुए हैं तो भक्ति नहीं करते हैं। संगम युग पर भी हम जागे हुए हैं तो हम भक्ति नहीं करते। अभी हम बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, स्व परिवर्तन। तो भक्ति माना ही सो जाना। और
दूसरा बाबा का आज टॉपिक है कि हमारी माया से कैसे संबंध है। तो मैं कुछ वर्ष पहले फुटबॉल का कोचिंग करता था। मैं बच्चों को पढ़ाता था उस समय और कोचिंग भी फुटबॉल का करता था। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी रोने लग पड़ते हैं। तो उनको ट्रेनिंग में यदि आप बहुत सिंपैथी देंगे ना तो रोते ही रहेंगे, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। आप सब तो अनुभवी हो, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स मेजॉरिटी होंगे। तो यदि हम टू मच, जैसे बच्चा गिर गया और बस अब उनके पास अटेंशन देने के लिए गई, तो वो बच्चा सीख जाएगा कि रोने से उनको बहुत अटेंशन मिलता है, तो रोता ही रहेगा। तो मैं क्या करता था, बच्चा खेल रहा है, गिर गया, रोने लगा, बस खड़े हो जाओ, कोई मेरे से तो कोई सिंपैथी मिलने वाला ही नहीं है, चलो कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ो, ट्राई करो। तो जल्दी बच्चा सीख जाता था कि रोने से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, रोने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बाबा आज कह रहा है कि हम बच्चे रोते रहते हैं। बाबा आप अपनी माया को कहो कि आवे ही नहीं, अपनी माया बाबा बाबा की माया हो गई। बाबा आपकी माया आप अपने पास ही रखो। तो यदि हम बोले बाबा की माया है तो बाबा कोई सिंपैथी देगा क्या? बाबा कहता है मैं माया को और ही कहूँगा, तो और ही उनके पास चले जाओ और ही टेस्ट दो। बाबा ने क्या कहा? बाबा से कोई सिंपैथी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं तो हम रोते रहेंगे। तो बाबा हम सबको मेंटेलिटी सिखा रहा है कि तुम्हें माया से ऐसे डरपोक होकर के संबंध नहीं रखना है कि माया की तूफान आते ही रहते हैं, बाबा क्या करे। तुम्हें ऐसे गंभीरता से माया से सामना करना है। युद्ध के मैदान पर हो, तुम जानते हो कि ताकत कम है। तो एक बारी मैं मधुबन में था, जब किस भाई ने दादी प्रकाश मणि से पूछा था कि कैसे मालूम पड़े कि विक्रम का बोझा उतरता गया। तो दादी ने कहा कि वो विकारी संकल्प कम, विकारी फीलिंग्स कम होता जाता है ना, तो ये निशानी है कि पास्ट का बोझ उतरता गया। समझो काम विकार का बोझ है, तो फिर काम विकार का संकल्प और फीलिंग्स आता रहेगा। क्रोध का बोझ है तो क्रोध का, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ता है। तो बाबा आज कह रहा है कि आप जितने कर्मातीत अवस्था से नज़दीक पहुंचते जाएंगे ना, तो ये सब बंद होता जाता है। परंतु बोझ है तो वो बहुत तूफान अंदर चलता रहेगा। तो इसलिए अंदर ताकत चाहिए। और बाबा जब ब्रह्म बाबा साकार में था, तो बाबा हमेशा कहा कहता था कि कुछ भी भूल हो गई बाबा से तुरंत बताओ, क्योंकि फिर अंदर शर्म रहेंगे ना कि मुझे बाबा को बताना, क्या बताऊंगा बाबा को, तो फिर पाप वृद्धि को नहीं पाएंगा। तो ये भी एक अच्छी युक्ति है। यदि कोई है, आप किसी को ट्रस्ट करते हो, तो आप उनको बतला सकते हो, ये भी एक अच्छी है। नहीं तो आप बाबा को सामने रखो कि बाबा को क्या हम मुंह दिखाएंगे, तो पाप वृद्धि को नहीं पाएगा। ये संबंध ऐसे नहीं कि तूफान आता रहता है, बाबा मैं क्या करूँ, फिर वो आदत, ये भी एक संस्कार बन जाता है ना कि हम विकार को सहयोग दे रहे हैं। तो ये भी संबंध नहीं रखना है ऐसे। तो आज का वरदान में भी बाबा कह रहा है तुम्हारी स्व स्थिति परिस्थिति से बड़ी बनाओ। आगे चल कर के तो क्या क्या दुनिया में होने वाले हम सब समझदार हैं, हम जानते, ज्ञानी तो आत्मा है, हम जानते हैं
तो इसलिए अभी से बाबा ने बहुत समय से हमें चांस दिया, समय दिया है तैयारी करने में। तो इसलिए हमें तैयार करना, अपनी स्थिति को तैयार करना है। तो आज का भोग संदेश में भी बाबा का ये एक भाषा है कि हम बच्चों की अवस्था समय से तीव्र होना चाहिए, परंतु बाबा देखता है समय तो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है विनाश के ओर, और बच्चों की अवस्था धीमी है, इतनी टाइम अनुसार भी नहीं चल रही है, टाइम से पीछे होनी चाहिए, टाइम से आगे। जैसे मामा बाबा बड़ी दादियाँ टाइम से पहले, विनाश से पहले ही सब कर्मातीत बन गए ना, तो उनकी अवस्था समय अनुसार नहीं थी, समय से पहले थी। तो बाबा ये देखना चाहता है हम सब में। तो बाबा कह रहा है उसके लिए अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ। बाबा ये बहुत अंडरलाइन कराता ही रहता है हर सप्ताह, साइलेंस पावर। और बाबा कनेक्शन बतलाता है ना कि साइंस वाले, उनकी बुद्धि को टचिंग मिलेगा आपके योग बल से, आपकी साइलेंस से, तो वो और ही रिफाइनमेंट करते रहेंगे, क्योंकि सारे वृक्ष को वाइब्रेशन मिलता है ना। तो इसलिए बाबा कहा कहता है कि तुम बच्चों में ये कंट्रोलिंग पावर, कैचिंग पावर और ट्रांसफॉर्मिंग पावर, कंट्रोल करने की पावर, ये मुख्य है ना। एकाग्र मन बुद्धि को एकाग्र करना है, हम सबको अभ्यास करना है दृढ़ता से। हर समय जब योग में बैठते हैं तो एकाग्रता का अभ्यास करते रहना है। फिर इससे हमें बाबा का जो सूक्ष्म इशारा है, चाहे मुरली द्वारा चाहे कर्म में भी, यदि मन एकाग्र है तो बाबा का टचिंग हम कैच कर सकेंगे। नहीं तो अंदर मन में 2-3 संकल्प चलता रहता है ना, तो कौन सा राइट है ये डिफ़िकल्ट पड़ता है निर्णय लेने में। तो और तीसरे, हम जानते हैं क्या करना है, परंतु यदि परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है तो जानते हैं करते करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल धारणा नहीं होगी। तो इसलिए परिवर्तन करने की शक्ति भी चाहिए। तो साइलेंस पावर से ये 3 शक्ति बढ़ती जाएंगी। तो ये बाबा देखना चाहता है हम सब से। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 30th of December 2021. The song of today's Murli is Awaken, O Brides, Awaken. And when we were all devotees, whether we were devotees in this birth or devotees in our past birth, we thought of ourselves as being very enlightened. We thought of ourselves as being very good people, as being somewhat superior maybe as being right in certain aspects, as being favored by God in certain aspects. And we probably look down on non-spiritual people. We might have struggled to tolerate them even. We might look at people who are materialistic, hedonistic, and think that actually we are far superior, we are religious. And then with regards to people who have different beliefs to ours, part of our mind would think that, well, they're wrong. We are the correct ones. And one day God will come and show them that they are wrong, I am right. And in this way we feel that sense of confidence in our own beliefs in Bhakti. And what does Baba come and say to us? That all of you were wrong. No, we didn't expect that.
And today Baba is saying, awaken, because bhakti means to be asleep. Now, we thought that we were the enlightened ones, that we were awake. Other people were asleep. And Baba says, no, bhakti means to go to sleep. If you think about it, what percentage of our path of bhakti involved the unadulterated worship of Shiva? Maybe 1, 2%? It's not much. I don't know how many births we do it for. Maybe, I don't know, 1 or 2, maybe a couple more, but it's not that much. And you look at how many centuries we've been doing bhakti of those that are not God, whether it's deities or whether it's religious founders or saints or the elements of nature. We've been mainly performing devotion of everyone other than God. So Baba is now saying, awaken, O brides. You are the lovers of half a cycle, but you haven't really been loving the incorporeal Shiva for many centuries. Now time to awaken. Baba is here. When you're awake, you actually don't do any bhakti. So at Confluence Age, we don't do bhakti. We remember Shiv Baba and we study the Murli and we focus on self-transformation. And then in the Golden and Silver Ages, we don't do any bhakti either. So to be awake means to be awake from bhakti. And Baba's making us aware that not only have we got a burden of sinful actions through using the five vices, but we also have a burden of sinful actions through performing bhakti. There are a number of Murlis where Baba outlines that to us, that the ways in which we've insulted God through praising Him. And of course, by worshipping the wrong gods, that would also have a burden. That is also a disregard for Shiv Baba. So we have, and then as we know, there have been many wars fought in God's name, and who knows what we've been involved with. So there's a burden of sin through doing bhakti as well. And so Baba is saying you have to awaken. And then Baba's second topic is surrounding our relationship with Maya. And Baba is asking us to question how powerfully and correctly we're dealing with her. I used to teach children, and part of my teaching, or certainly after school teaching, was running a soccer training. I used to run it quite often Saturday mornings. And when you're a soccer coach with children, you're teaching them self-respect, confidence, as well as the soccer skills. And I'm sure many of you are parents or grandparents or have other such connections with children. And children are looking for attention. And if they are used to gaining attention every time they cry, then they're going to cry a lot, right? So what would happen is children are playing soccer, and of course they're going to fall. And maybe it's a boy who will just begin crying all of a sudden. Now, the tendency can be for everyone to just rush. So other children go and rush. Oh, are you okay? Adults go and rush. And I would just be totally not interested. You wouldn't get sympathy from me. If you're looking for sympathy, I am totally the wrong person to come to. Because the child would just cry, and I'll just leave them there to cry. Just tell them to get up. Okay, yeah, these things happen. Dust yourself down. Anything broken? No. Okay, come on, get on with it. Carry on playing. And through that, the child learns that actually the mentality is not one
of being upset every time you fall, every time you're tackled. But the mentality needs to be one of resilience. And Baba is also saying this to us, that we keep crying every time Maya comes. And we say to Baba, Baba, can you tell your Maya? See, now it's become Baba's Maya. Baba, can you tell your Maya to not come anymore? And do you think Baba has sympathy for us? Baba's saying, no, I'm going to tell Maya to come even more. What's wrong with you? Come on. Why are you crying? Maya is there to test you. Come on. You'll be up for this. You're on the battlefield. Can you imagine a soldier crying? You're on a battlefield. So make sure that your relationship with Maya is one of the battlefield and not one where she's dominating you. Now, we've got to develop our strength. As we are weak, of course, then thoughts and feelings and impulses, they're going to overwhelm us. So we need to develop our yoga power. And it's really having many Amrit Velas over a period of time that's going to charge our battery. And then, of course, we also have to build our chart of remembrance in the day. And I was in Madhuban some years back when one brother had asked Adi Prakash Muni that what's the indicator that our past sins are being absolved? And her response was that our thoughts and feelings that are governed by vices, they reduce and they don't happen anymore. So what she was saying was, if we've got a burden of sin through lust, then lust is going to trouble us now. Thoughts and feelings and sense organs are going to pull. If we've got a burden of anger, then those feelings pull us. So what happens is, as those past burdens are absolved, then the strength of feeling of those vices is also reducing. And that's our indicator. And what Baba's saying today is that the closer you get to your Karmatit stage, those storms of Maya, they will just finish off. So Brahma Baba would have been close to his at the time that Bapdada was speaking this morning. So we gain that insight, what it's like. And Brahma Baba used to always advise the children to write to him if they're making any mistakes, thoughts, words, and actions. And why that was that because we're sharing it with Baba, we'll have some shame. And he's saying that then your sinful thoughts and feelings, they won't expand. So this is the other thing we've got to be careful of, that we're not too complacent with Maya, we're not too comfortable with her. Sometimes what can happen is we accept that storms of Maya are going to come, that our illness is going to come from inside out. And we actually then end up, even on a subtle level, supporting that Maya. It's like, well, it's like we're tolerant. And it's just, well, this is part of the process. And to an extent that's true, but we also have to be quite cautious that are we just creating a new normal where those thoughts and feelings are the normal and the ups and downs are the normal. So Baba's saying that you've got to be careful, otherwise these things just expand. They're like addictions, aren't they, the vices? And so in today's blessing as well, Baba's saying to us, your stage, your inner stage has to become greater than any external circumstance. And of course that can only happen as we accumulate strength. And in today's Bhog message, Baba is saying to us that you need to develop your power of silence. His observation is that time is moving towards the destruction of the Iron Age quicker than the children's stage is.
Baba's seeing that sometimes we move quickly and then we just slow down again, but we haven't got that consistent speed. But we need to get there ahead of time. We need to be the ones whose stage is there ahead of the speed of time. Our speed of effort should be faster. Like we've seen with Baba and Mama and with the senior daddies, they've already reached their karmatic stage. Destruction, they were not waiting for destruction to motivate them. They just got on with it and got there. And destruction will happen when it happens. So their karmatic stage is bringing destruction closer rather than the other way around. And this is what Baba wants. Baba's come early in order to give us this time to teach us, sustain us, and for us to be able to work on ourselves as well with Baba. So let's make the most of this and really increase our speed. Baba's saying, and how many times has he been emphasizing this to us? Children, develop your silence power. This is the key. And what Baba's saying is, as we develop our power of silence, 3 abilities will develop as well through that silence. The first is our controlling power. The second is our catching power. And the third is our transformative power. And all of us have to develop our concentration. Every time we sit with Baba, we must try, even if it's a few seconds, a few minutes, build that concentration. And then through the day, let's work on something where we can see the soul, something which requires our concentration. That will then develop our catching power. Baba saying that we are still failing to notice the subtle touchings that Baba's giving us. Could be some subtlety in the Murli. Could be that through the day just Baba's sending us a subtle thought and we're just not catching it because, of course, if our mind is busy with many thoughts, we don't know which one is Baba's, right? We sometimes might take the wrong decision and afterwards we regret it. And then thirdly, the power to transform, because Baba's children who study the Murli, we know what we've got to do, but we just don't do it, and we don't do it as quickly as we need to do it. So that's a lack of the power of transformation. And of course for that we need intensity and a lot of yoga power. So let's work on that and reflect on that as well today. Om Shanti.